जी बिल्कुल. Now, just in front of the MTA compound, and he's entering the MTA compound, and all the members of MTA are standing in a circle awaiting the arrival of their beloved master, Hazrat Khalifa al-Masih al-Khamis Sayyidullah Ta'ala ibn Aziz. And don't forget, these are young members of the Jamaat, Khuddam, Ansar from all across the globe, working together to convey the message and the broadcast of the Jalsa Salana to all corners of the world. And we can see Hazur is coming through now into the MTA compound, and we can see all of those eager volunteers of MTA who are standing there at attention, looking at Hazur and waiting to hear Hazur's words of wisdom to them. And we can see over the course of the day today with MTA's transmission, we spoke to you about all of the different teams and streams of different language streams that have been involved in the work of MTA, and we'll continue to do so over the next 3 days, whether it is Bangla stream, MTA 3 Al Arabiya, or the French stream. And all of those volunteers and MTA Africa team, all of those volunteers are there eagerly bending an ear towards Hazur and eager to take some words of wisdom. And also just a glance of beloved Hazur as well is enough to sate them with their love for Khilafat. जलसा सालाना बरतानिया के मौके पर क्योंकि हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ की यहाँ मौजूदगी इसको मरकज़ी जलसा बना देती है. दुनिया भर से MTA के हमारे रज़ाकार, हमारे वॉलंटियर यहाँ आते हैं और यहाँ से नशरियात को दुनिया भर में पहुँचाने की कोशिश की जाती है. MTA अफ्रीका के ज़रिए अफ्रीका के बर्र आज़म में, MTA फ़्रेंच के ज़रिए फ़्रेंच बोलने वाले ममालिक में, MTA अल अरबिया के ज़रिए अरबी बोलने वाले ममालिक में, और इस तरह उर्दू और अंग्रेज़ी में नशरियात को भी दुनिया भर में पहुँचाया जाता है. रवां तराजम दीगर ज़बानों में भी हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पर हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ की हिदायत, आपके ख़िताबात और ख़ुतबा जुमा का, और ये सारी दुनिया में दुनिया भर में फैले हुए अहबाब व ख़वातीन तक ये हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ का पैगाम, खिलाफत अहमदिया की आवाज़ लोगों तक पहुँचती है. कोई भी रंग हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी ज़बान हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. ये इस्लाम का पैगाम है, ये जमात अहमदिया का पैगाम है. हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ इस वक्त जलसा सालाना बरतानिया के मौके पर ये कायम MTA के कंपाउंड में तशरीफ़ फरमा हैं, यहाँ मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और मुख्तलिफ़ कारकुनान से गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं. And these are some really beautiful scenes within the MTA compound, and we can see Hazur making his way around and taking time to speak to every single member of every team as he makes his way around, and whether it is MTA Africa, where Hazur is paused at the moment speaking to the members of that team, or whether it is MTA 3 Al Arabiya. Hazur is at the moment outside of the MTA world area as well, speaking to all of the volunteers and giving them, showing them the affection, the love that will help them to complete the work that they need to do over the next 3 days. And it really is a beautiful scene here as we see all of those volunteers stood at attention, waiting, waving, and feeling that love and attention from beloved Hazur. And we can see as we watch this scene all of these individuals, and you see what a big machine MTA is in respect of all of the volunteers who work within MTA, and every single aspect of the work of MTA is done by these volunteers. And it really is incredible to see, because all of the transmissions that you get at home, watching the Jalsa Salana proceedings, watching the documentaries, being able to see every aspect of the Jalsa Salana is brought to you by the grace of Allah. And with the work of all of these volunteers. And we can see there the MTA Lajna team as well, waiting at the end
of this line of volunteers also, and the Lajna members are absolutely critical and crucial to the work of MTA in respect of all of the hard work that they put in to ensuring that MTA is able to bring you the proceedings of the Jalsa Salana over these 3 days. And this really is, as we said, a beautiful scene as Hazur makes his way around the complex and gives his attention and words of wisdom and words of love to all of the volunteers who are there working within MTA. जी डॉक्टर साहब, ये वही नज़ीबों से मिला करने वाली मोहब्बत के नज़ारे हैं जो इस वक्त MTA के वॉलंटियर्स और कारकुनान जो अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। हजूर से शफ़क़त हासिल कर रहे हैं, हजूर उनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं और हजूर की मुस्कुराहट जो है वो इस वक्त हर किसी का ईमान भी ताज़ा कर रही है और एक जोश और जज्बा पैदा हो रहा है जलसा सालाना के हवाले से, आइंदा दिनों में काम करने के हवाले से। ख़ास तौर पे आप MTA की टीम में ये भी देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे कारकुनान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे बूढ़े हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले, गोया मुख्तलिफ़ किस्म की बोलियाँ बोलने वाले हैं जो यहाँ मौजूद हैं। मुतरजमीन की भी एक बहुत बड़ी टीम है जो लाइव ट्रांसलेशन कर रही होती है मुख्तलिफ़ ज़बानों में और ख़ास तौर पर हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनअज़ीज़ के ख़िताबात की यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानों में लाइव ट्रांसलेशन हो रही होती है। इसके अलावा MTA का एक वसी निज़ाम है। ये जितने भी आपको कंटेनर साइट पे नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं जो इन दिनों में दिन रात यहाँ मेहनत से काम कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ एज ग्रुप के आपको लोग यहाँ नज़र आएंगे और ये भी नज़र आएगा आपको कि सुबह हो, शाम हो, रात हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर कोई दिन रात मेहनत के साथ जलसा सालाना को कामयाब बनाने के लिए और यहाँ की नशरियात को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और काम करता है। हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनअज़ीज़ के ये लम्हात जो आप MTA के इस कंपाउंड में गुज़ार रहे हैं हमारे लिए सरमाया हैं और हमारे लिए गोया ये हमारे अंदर एक नई रूह डालने के मुतरादिफ़ हैं और ये लम्हात हमें याद रहेंगे और हम इन्हीं को देखते हुए ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में काम करेंगे। हजूर की हिदायत हमेशा बहुत अहमियत की हामिल होती है। अभी हजूर ने जिस तरह अपने ख़िताब में हमें सिक्योरिटी के हवाले से तवज्जो दिलाई है और दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई है, ये हमारे लिए बहुत अहम चीज़ें हैं। मुझे याद है गुज़श्ता सालों में हजूर ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुस्कुरा कर काम करने के बारे में भी तवज्जो दिलाई थी। हजूर ने इस बारे में भी तवज्जो दिलाई कि मुख्तलिफ़ कारकुनान का ख़्याल भी रखना है और खाने पीने का भी ख़्याल रखना है, सेहत का भी ख़्याल रखना है। तो ये तमाम हिदायत जो साल हर साल से हजूर हमें देते आए हैं हमारे लिए बहुत अहम है और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी जलसा सालाना मरकज़ी जलसा सालाना की याद में मनाया जाता है वहाँ के लिए भी ये हिदायत बहुत अहम हैं। इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हजूर जो लजना की टीम है MTA की उससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पर हमारे तमाम कारकुनान तो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह के पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि तकरीबन 700 के करीब MTA के वॉलंटियर्स हैं जो जलसा सालाना के अय्याम में यहाँ इस कंपाउंड में या पूरी जलसा का हदीक़तुल महदी में मौजूद होते हैं। हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनअज़ीज़ की यहाँ मौजूदगी गोया ये शहर ज़िंदा हो गया है और आइंदा 3 दिन यहाँ गोया एक रूहानी माहौल होगा जिससे हम सारे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे और MTA के कैमरे की निगाह से आप तक ये माहौल पहुँचाने की कोशिश करेंगे। Ji, Burhan Sahab, and as you quite rightly said, all of the volunteers who work within the teams, the various teams of MTA, bring you the Jalsa Salana over the 3 days of the Jalsa. You can see many, many members, not all, but many, many members of those teams. And as Hazur was walking around and the camera was panning around, we could see people of all ages, as you said, from young children through to older members of the Jamaat who are there as volunteers. And it is a beautiful, beautiful aspect of the way in which
this voluntarism works within the Jamaat is that those young members are there and they're working and they're learning. And they're learning both the skills that they need to be able to do the job, but also they are learning how important it is for them to sacrifice their time and their effort for the benefit of the Jamaat. And that is a really beautiful thing as well. And we can see Hazur is talking there to the Lajna members of MTA as he makes his way through the MTA compound. And the one really important aspect of this is that as Hazur is there and giving his words of advice to the various volunteers of MTA, there are lots of aspects of this which are really, really important. And for those who pay attention and take in all of those different pieces of advice from beloved Hazur, it all maps out to a real understanding of how to be successful in terms of any endeavor that is required by the Jamaat for the benefit of the Jamaat. And as you said, Rahan, so that could be anything from a focus on security to ensuring that people are happy in the work that they're doing, smiling, making sure that they are looking after each other, that the volunteers are looked after, that the guests of the Promised Messiah are looked after as well. And so really, really important that this advice and attention is given by Hazur because it really fulfills an important aspect of the work of the Jamaat as well. जी डॉक्टर हमाद साहब, जिस तरह हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसे अज़ीज़ ने ज़िक्र फरमाया था कि साल हा साल से काम करने की वजह से जलसा सालाना के कारकुनान जो हैं वो ट्रेंड हो गए हैं, लेकिन हम इस बात के गवाह हैं कि हम सब की ट्रेनिंग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसे अज़ीज़ ने ख़ुद फरमाई है। और ये जो भी तरक्कियात आपको नज़र आ रही हैं, जो भी इंतज़ाम नज़र आ रहा है, ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल और हुजूर की बराह रास्त रहनुमाई की वजह से है। हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसे अज़ीज़ इस वक्त MTA के कंपाउंड से बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं और ये मुआयना जो चंद घंटे पहले शुरू हुआ था और इसमें दरमियान में वो बाकायदा तकरीब जिसमें हजूर ने ख़िताब फरमाया, हमें हिदायत से नवाजा, उसके बाद भी ये मुआयने का एक हिस्सा जारी है। हजूर लजना जलसा गाह में तशरीफ़ लेके गए और अभी कुछ देर पहले हजूर MTA के कंपाउंड में थे और ये सारे नज़ारे जो हैं, जो कैमरे की निगाह से सारी दुनिया में फैले हुए अहमदी अहबाब देख रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खलीफा वक्त की किसी जगह मौजूदगी उस जगह के माहौल को किस तरह बदल देती है। अभी जलसे का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ है, वो कल जुमे वाले दिन से होना है, लेकिन जलसे का समा अब हदीक़तुल महदी में भी बन गया है, जो गुज़श्ता 2 हफ़्तों से इस्लामाबाद यानी मस्जिद मुबारक कसर खिलाफत के एरिए में बना हुआ था। We can see, as you said, Hazur's presence here during this inspection of the Jalsa Salana site is so very, very important and is really a crucial and critical part of the Jalsa Salana itself, albeit the Jalsa Salana starts officially tomorrow. This is a really important aspect of the Jalsa and really this inspection is one of the aspects of the inauguration of the Jalsa itself. You can see the number of cars, you can see the number of tents, you can see how much of the Jalsa has really begun with all of these volunteers here already starting the work and staying here on site. The langar is working to feed them, the facilities are there for them to rest and to work.